ladies and gentlemen, welcome back to the Sports Side with collaboration with APA and World Cup special Pakistan versus India. India once again won this match, and we have with us special guest from Edges and Sledges, DJ. How are you? And hope you are doing well. Hi, I'm good, guys. Commiserations on today's game, but yeah, glad to be back on the podcast and glad that your channel is doing so well. So congratulations on that. Thank you very much. Okay, so if we talk about the game, I just want to recap the previous thing. अगर हम controversies वगैरह पे आते हैं, if you want to touch down on that situation, what's your point of view on all that fuss? कंट्रोवर्सी कौन सी बॉयकॉट वाली, हैंडशेक वाली, कौन से कहाँ से शुरू करें? कहाँ से शुरू किया Uh, जाए? मेरे ख्याल से लेट्स कम फ्रॉम बॉयकॉट वाली जो अभी रिसेंट है हैंडशेक वाली तो बहुत अच्छा, पुरानी है अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ये बॉयकॉट वाली तो देखिए, आईसीसी के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। India and Pakistan are always drawn in the same group. Both for BCCI and also the PCB, it's also very important. If you look into the legal aspects of it, they called for a force majeure, which was based on the Pakistan government not allowing the team to travel. There's no logic to that because it's being played in Colombo based on the previous agreement passed of the Asia Cup. So this match was always going to happen. The question of when it would be decided that this match would happen was the main question. Now, India was already always saying that we are ready, our flight tickets are booked, हम तो जा रहे हैं. I think the uncertainty probably affected the Pakistan team more because they didn't know whether they were actually going, what games were going on behind the scenes, right? So, um, there will, I think, be repercussions after this tournament. But for the moment, I think the show goes on, right? So I think this sort of stuff will there will be. I think it's a very interesting kind of political development in that Pakistan and Bangladesh have there are a lot of eyeballs in those countries on the game of cricket, right? And if they are deciding to take a stand against the BCCI and India on this, it will be interesting to see how that plays out purely in terms of commercials, because as you know, most of the revenue in the world of cricket is derived by three nations: India, Australia, and England, right? So if you take a stand against one of those nations, it will be interesting. Yes, but still, the positive thing from Pakistan perspective is we took a stand and मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला कि हम फील्ड नहीं लेंगे in against India, but then I see coming toward Pakistan and this all type of situation is favoring Pakistan that at the end Pakistan wins what they demanded, they get their demands done by the ICC. अच्छा, Let's come ये to बात तो सही yeah. है, मगर अगर वो Hmm. नेदरलैंड के साथ आप मैच हार जाते हैं ना, तो बहुत हम्म प्रॉब्लम हो जाती। वो तो और फिर हम तीन वो बाल तीन बाल घंटे बच में गए, बाहर थे वो बाल बाल बच गए। नहीं तो फिर तो इंडिया बोलती चलो आपने तो बॉयकॉट कर दिया, अब आगे चलो। नहीं, इंटरेस्टिंग था, बट इट्स टू मच ड्रामा ऑफ द फील्ड बॉस। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट इट्स डिफिकल्ट टू फॉलो आल्सो एंड कीप ट्रैक कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। और आपने नेदरलैंड्स की बात की, अभी तो नमीबिया के साथ भी हमने खेलना है। नमीबिया ने जिस तरह इंडिया को टफ टाइम दिया है वी आर नॉट श्योर। सो लेट्स टॉक अबाउट द गेम उसामा भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, व्हाट्स योर ओवरऑल टेक ऑन दिस गेम व्हिच वी प्लेड टुडे? Uh, I think it was a fairly one-sided game. India was a better team throughout the game. Uh, like, and it wasn't a surprise, the result, because India have been the better side in the past few months. I think since 2024 T20 World Cup, they have won 41 games and lost only six. The record in ICC tournament is also pretty good. So, uh, going into the game, India was starting as favorites, and if India did not win the game, that would have been a surprise result for me. Uh, but the problem that I really felt about from Pakistan, especially, was uh, there was a lack of fight from the Pakistan side, and
you could feel that, especially with the shoulders going dropping down so soon. Like, yes, you are playing a very good side, but you're still there to compete, and you should be trying to compete as hard as possible, because winning and losing is a separate thing, but to be competitive on the field, it's very important that you show that fight and you show that spirit, that you are in for the game and you are there to take on the opposition. So that pressing point was a big problem, and especially like the way Pakistan started with the ball, that was very hard playing. You got Abhishek Sharma in the very first over, and you had India in control throughout the power play. It was not like that India had ran away with the show. They were like at 42 for one after 5 overs. So that's a pretty mediocre start if you look uh, from India's perspective, the way they have been batting over the past few months. But after that, of course, the captaincy, you can talk about the bowling changes. They were not as smart as they could have been. But that's always the case. Like, you can always say, okay, they could have brought in Usman Tariq earlier. They could have, not bowled Shadab, or, Salman Ali could have continued bowling. He was bowling so well. Saim could have bowled more in the power play. All these sort of things. But I think we should not be taking away the credit from Ishan Kishan, because he played really well. That was a very good innings, and I think all of the batters struggled on that surface, whether Sky or Tilak Verma. All of them were struggling, but Ishan Kishan, the way he played, it felt like that he was batting on a different surface. And as far as Pakistan's batting is concerned, so I felt like that uh, the intent was very right, like, throughout the power play. Uh, like, yes, they lost wickets. Uh, the shots that Salman Ali or Safzada Farhan played were, pretty poor shots. Like, the shot selection could have been better, but at least I give them the marks, or, इशान the भाई credit वैसे that, अगर yeah. हम पहले इनिंग्स पे रहें तो जो मेजर एक क्वेश्चन है इस पूरे इनिंग्स में वो ये है कि उस्मान तारिक शुड हैव बीन ब्रॉट इन अर्लियर Hmm. मेरा तो इस पे कि आई एग्री विद व्हाट आगा डिड इट वाज कि बेसिकली आप क्रूशियल ओवर्स Yes. में उस्मान तारिक को बॉलिंग दें क्योंकि अब जैसे हमने देखा है इंडियंस ने रिस्क नहीं लिया उस्मान तारिक पे इतना कि वो उसको काफी मारने जाए तो आपका क्या टेक है इस पे एब्सोल्युटली, बिकॉज यार देखो, बात वही है कि रिस्क उस्मान तारिक अगेंस्ट तब लेना पड़ता कि अगर इंडिया नीडेड रन्स एट द डेथ, बट बिकॉज ऑफ ईशान किशन की जो बैटिंग थी, इंडिया की एवरेज इतनी अच्छी सेट हो गई थी कि दे डिड नॉट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लाइक, उनकी 8-9 की एवरेज सेट हो गई थी, तो उसके बाद ऑल दे हैड टू डू वाज मेंटेन दैट, एंड दे वुड गेट अ स्कोर ऑफ 180, which is basically was a more than par score on that surface. I think 150 to 160 was a par score इस विकेट पे। तो आई थिंक जब वंस इंडिया हैड गॉन सो अहेड, तो फिर अ, उनको उस तरह रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं थी। एंड आई एग्री विद कि उस्मान तारिक का जो जिस तरह बॉलिंग करवाई वो ठीक थी। लाइक, वो ठीक थी। यस, आप एक आध ओवर पहले करवा सकते थे, बट ऑल इन ऑल जो जो उसको जिस तरह बॉलिंग करवाई वो ठीक थी। बट आई थिंक a few overs, like जो even like we had them in control, like after जब साइम ने 2 आउट किए, पांड्या को आउट कर दिया, तिलक वर्मा को आउट किया, तो उसके बाद भी एक चांस था, देयर वाज अ मिनी कोलैप्स ऑफ सॉर्ट्स, बट वहां पे ब्रार एंड शाहीन ने जो 2 ओवर्स किए, वहां पे भी लाइक यू गेव अवे लाइक 25-30 runs, which could have been far lesser। अगर आप वो बेहतर इकोनॉमिकल ओवर्स होते तो यू माइट हैव बीन चेजिंग अराउंड 165। एंड आई नो कि 10 रन का इतना डिफरेंस नहीं होता, बट मेंटल प्रेशर होता है अगर आप you're going for chasing 8 and over as compared to chasing 9 and over। So I think, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें ना, मतलब जो मुझे एक चीज़ लगती है वो ये है कि जब आप बॉलिंग आप
का प्री डिसाइडेड था कि सलमान अली आगा इज गोइंग टू ओपन विद द बॉल, तो वहाँ पे प्लेइंग 11 की सिलेक्शन में मुझे लगता है कि वी डिड रॉन्ग कि भाई हम शहीन शाह अफरीदी के साथ गए हैं। इफ़ यू आर नॉट गिविंग शहीन शाह अफरीदी द फर्स्ट ओवर, यू नो कि इंडिया के जो टॉप 3 हैं वो लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो तब आपको उस शहीन की ज़रूरत उस तरीके से महसूस नहीं थी हो रही। यू कैन ड्रॉप शहीन अफरीदी एट दैट मोमेंट और आप नाफे को अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, क्योंकि क्योंकि अगर सलमान अली आगा आपने डिसाइड कर लेके अगर वो पहला ओवर करा रहा है और उसके बाद देन यू कैन यूज़ फ़हीम अशरफ एज़ वेल फॉर द सेकंड ओवर। बट हमने पाकिस्तान की चलो बॉलिंग पे तो बात कर ली है, लेट्स कम टुवर्ड्स इंडियन बैटिंग। मतलब अभिषेक शर्मा, आगा सलमान ने बोला कि अभिषेक शर्मा को लेके आओ, फिर अभिषेक शर्मा को आउट किया। बट जो बिगेस्ट फियर जो था, जो कि मैंने प्री शो पे भी मैं उसामा भाई से बात कर रहा था कि जो मुझे डर लग रहा है वो ईशन किशन से, और वो ईशन किशन ने आके आई गेस वन साइडेड मैच को एक तरफ कर दिया, क्योंकि उसके बाद भी हमने इंडियन बैटर से उस तरह से खेलते नहीं देखा। सो रिव्यूइंग इंडियन बैटिंग साइड, डीजे व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन? So Kishan was outstanding. I mean, he played a knock as you were saying. He played a knock batting on a different track completely. He's been in good form domestically as well. He's got a T20 100 recently in the series just completed. Um, and frankly, he didn't stop. He could have slowed down in the old days. He would have just slowed down and got 100. He got 77. He didn't care. He was still batting. He had another what? 10 overs left. He could have easily Hmm. got 150 if he'd slowed down and then but what I think he realized was the time to score the runs was with the new ball, right? And that was the big difference. I think you talked about Tariq bowling at the end. I think it helped that the ball was much older. With slow bowler ke liye, it was gripping quite a lot. The ball was stopping. Other than Kishan, even a player like Tilak who batted 25, 30 balls wasn't able to hit the ball off the square really. I think he hit 1 6 over cover, but good impetus was very difficult to find with the older ball, to be honest. So I think Kishan recognized that, although they lost Abhishek Sharma, who was the danger man, quote unquote, in the press conference, and all the chatter was about that. I mean, Kishan is he's been the pocket dynamo, and it was good to see him actually score some runs and keep going, even hitting inventive shots. He also showed touch. It was not just brute strength. Okay, he was hitting over mid wicket. He likes to hit those shots, but there were a few late cuts which he just let the ball glide. Yes. The outfield was quick, right? So Hmm. he recognized that the pitch may be slow, but the outfield was quick. So if you time the ball, and a lot of the Indian players rely on, like Babar, on timing the Hmm. ball rather than muscling the ball. Like there are players that muscle the ball, and then there are players that time the ball. And so even Hmm. someone like a Pandya who came later found it difficulty. First ball he hit up in the air and he was gone. So I think Kishan was the difference between the two teams today. The challenge, I think, for most teams playing India these days is that one of these guys stands up, right? And it's the same thing, and I don't want to sound too obnoxious, but it's the same thing that the Australians used to do in the 2000s, right? Like you'd have Justin Langer, Matthew Hayden, Ricky Ponting, Damian Martin, Adam Gilchrist. They just kept coming one after the other, right? And यहाँ पे Yes. अगर आपके ये 4 विकेट निकल गए, यूएसए के साथ क्या हुआ था हमारा, 4 विकेट तो निकल गए थे, Hmm. 6 विकेट निकल गए, तो 66, 77, and then Sky scores 84. And Hmm. so there's always going to be some guy in this team that's going to put his hand up and do it. And today, what they did well was Tilak is not a guy who doesn't score quickly. He Hmm. can score pretty quickly, but he put his head down and said, Kishan, it's his day today. आज उसका Hmm. दिन है. I'm just going to play calm and I'm going to give him strikes. So he was knocking ones, and unfortunately, none of them could go on because at one point it was looking like 200, which is an impossible score to chase on that track. It was a difficult pitch to bat on, and it got slower. What I think Pakistan, I don't know why they chose to field on a pitch like that where there's going to be no dew, so there's going to be no difference between the two teams, like with on the ball coming onto the bat. Why, it's going to slow down even further in the second innings. And India had played three spinners, so Kuldeep, Akshar, and Varun. So that I think I don't know what your take on the choice of bowling Yeah, first was. I would like to add on this. Like before the World Cup, हमने 3 मैच खेले against Australia. We batted first. Our strategy was
putting the runs on board and then try to defend it. I don't know when we came into the World Cup हमने पहले मैच में टॉस जीत के we decided to ball first. फिर उसके बाद जब इंडिया का मैच है उसमें जब आपको पता है कि ड्यू नहीं है तब भी हमने पहले बॉलिंग की. और कोहली भी मुझे नहीं है लग तो व्हाई यू बॉलिंग फर्स्ट? या कोहली भी नहीं है. लेकिन वो मुझे लगता है कि हमारा जो मसला है ना वो एक जो हमारी टीम का मसला है, हम हमारा दिमाग का मसला है. हम दिमाग के साथ खेलते हैं. हमें अभी भी डाउट था कि कहीं न कहीं से बारिश आ जाएगी, नेट रन रेट का इश्यू हो जाएगा. तो हम उस तरीके से मेरे ख़्याल से दे गो विद बॉलिंग बॉलिंग फर्स्ट. और I, मुझे लगता है कि I, आपकी बॉलिंग फर्स्ट में भी अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, अगर बॉलिंग फर्स्ट मुझे प्लानिंग बिल्कुल नहीं लगी जिस तरीके से हमने कैप्टेंसी की या जिस तरीके से मैनेजमेंट ने टीम खिलाई. जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर आपकी प्लानिंग थी कि आपने सलमान अली आगा को पहली बॉल देनी है, तो फिर क्यों शाहीन अफरीदी टीम का हिस्सा थे? जब आपकी प्लानिंग थी कि आपने स्पिनर्स के साथ जाना है, जब आपको पता था ये सब होगा, देन फिर आपकी टीम सिलेक्शंस में भी कमी नज़र आई. जब आपको पता था ड्यू नहीं आना, फिर आपने टॉस जीत के उनको बैटिंग करवा दी. तो बहुत से इश्यूज़ नज़र आए हैं. और जहाँ तक इंडियन टीम की आपने बैटिंग की बात की है, द पॉजिटिव थिंग इज़ प्लेयर्स को क्रिकेटिंग शॉट्स खेलनी आती है और हर प्लेयर प्रिपेयर्ड है. मतलब कोई भी विकेट गिरती है तो एक प्लेयर चार्ज लेगा. जैसे अगर हमने आज पाकिस्तान की बैटिंग देखी है, उस्मान खान ने ट्राई ज़रूर किया है, लेकिन हमने कोई जो सीनियर प्लेयर्स थे दे डिडंट इवन ट्राई टू, मतलब वो थोड़ा-सा लेके चलें या बेशक मैच को स्लो डाउन कर लें और तरीके से रन्स ऑन बोर्ड करें. जी, उसामा भाई. I wanted to add कि जो टॉस वाली बात थी, I think जो पाकिस्तान ने लास्ट तीनों मैचेस खेले थे अगेंस्ट इंडिया वर इन दुबई, और तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, एंड इंडिया चेज दो टारगेट्स डाउन. तो वो भी इनके बैक ऑफ द माइंड पे था कि वहाँ पे जो कंडीशंस थे दे वर आल्सो स्लो एंड लो, और टर्निंग कंडीशंस थे, लाइक इतनी टर्न नहीं थी या इतना बॉल नहीं फंस रहा था, बट दे वर थोड़े बहुत सिमिलर कंडीशंस टू दीज. तो उनके जहन में यही था कि वी in the final we scored 140 odd, India chased that. उससे पहले we scored 170 odd, India chased that. So there was like thought process के इस तरह के जो स्लो ट्रैक है वहाँ पे if we can restrict India to 130 140 or 150 somehow, तो there could be a chance that you can chase that target down. So I think this was the thought process behind them electing to bowl first. लेकिन अगर लेकिन इसकी हाँ अगर भाई हम बात इसके अंदर करते ये हैं. भी है ना हाँ. कि दुबई के हुँ, लाइक इट्स प्रोबब्ली द इजीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू चेज दुबई. हुँ. जितनी भी लाइक अनलाइक दुबई कंडीशंस हो उधर स्टिल देयर विल बी लाइक इट विल बी वेरी इजी टू चेज इन दुबई. हमने भी बट ये वहीं पे चेज़ इतना किया Yeah. लाइक था. हार्ड टू ड्यू लाइक काफी मुश्किल है ना. Yeah, but वही प्रॉब्लम है ना कि like जो historical data भी है पाकिस्तान का against India in big games, if you look at that, तो that also tells you that whenever you have batted first, you have struggled to put up a good score or a good total. So that was also playing on the back of their हाँ mind भाई that आपने हिस्टोरिकल डाटा की बात की है. इस पूरे मैच में ना मेरे दिमाग में एक पुराना मैच आता था और वो था एशिया कप का. इधर जो प्रेमदासा में हमने मैच oh yes, yeah, किया लाइक but वो इतना कोई मुश्किल मैच था ना देखने के लिए कि बस. yeah, वो जो तो लाइक दो बेसिकली दिन यहाँ भी एक तरह से वही हुआ है कि जिसमें ईशान किशन कोहली, सॉरी ईशान किशन आई थिंक पहले मैच में गया था जो कि वॉश आउट हो गया था, है ना. यस. yeah, yes, वो पहला तो मैच हाँ. में इसमें गया लाइक था. कोहली, एंड केएल, केएल राहुल. रोहित, हर Yeah, किसी ने जो है वो दिया था. फिर हम लाइक ऐसे ऐसे करके ये क्या हो गया ये क्या हो रहा है. yeah. अब So in वही terms of मैं तो था कि यार ये फिर वही हो रहा है. So in terms of that, I ले felt कि यार जो they struggled to put up good totals against India, so they were like whether than rather than कि we scored just 115 or 120 for 8 or 130 for 7 or something like that. It's हुँ. better off कि we try to restrict India. We'll have a target in front of ourselves and we can then try to chase it down. Yeah, and I think the वैसे difference लाइक is instead of focusing on your strengths and um, working out how your players will win the game, you're trying to focus on the opposition a bit too much, and that's, as you said, it's in you get हुँ. in your own head, right? And it's interesting. We dropped a player like Arshdeep from the Indian team. He's the highest T20 wicket taker in Indian T20 history. We're not एंड playing अगेंस्ट him, पाकिस्तान एज़ वेल उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. and we are not playing him. So.
Hmm. I mean, you've got to back your team and you've got to back your own strengths, right? And yes, of course, you should prepare for the opposition. You should know their strengths and weaknesses, but you have to push your own team and push your own strengths forward. And I'm sure like Pakistan is like they could come back and win the whole thing, right? And that's the whole Yeah. that's I think that's what keeps Pakistan fans interested in the game, right? Like they could go on a run and win everything to the end. But Yeah. it's just I think it's there's a little bit of a there's a bit of a mindset which is instead of looking at the other side and figuring out how you end up catering for the other side's strengths and weaknesses rather than looking at your own team and emphasizing those. Hmm. मुझे like जिस तरह अभी like you said the change of Arshdeep and Kuldeep, इंडिया ने एक और like चेंज की थी कि like संजू सैमसन को बिठाया था. तो Mm. like पिछले काफी टाइम से बात हो रही है कि like संजू इज आउट ऑफ फॉर्म, ईशान किशन इज स्कोरिंग रन एंड रन्स. तो like कितनी बड़ी चेंज थी ये कि फाइनली इंडिया ने कहा कि चलो ड्रॉप संजू एंड प्ले ईशान किशन. No, no, it's a big Uh, change. And he played five T20s, and Sanju kept Shubman Gill out of the team. Shubman Gill is our test captain and ODI captain. He's captaining Rohit and Kohli in the ODI game, boss. It's not a small thing to do. So Sanju had kept had kept Gill out of the side, and then he lost form in five games. He didn't score any runs. Kishan came in. He can keep as well. So he was a backup keeper and he did well in Yeah. the domestic game. He scored 517 runs in 10 games. His team won the domestic trophy, all of that stuff. But he was going to sit, and if Sanju got injured, he would play because we already had three left-handers at the top of the order. We had hmm. Abhishek Sharma, we had Tilak, and if you put Kishan in, it became three. So it's where three left-handers all of a sudden, which left hand, right hand is preferred, right, with Sanju. So Sanju was giving us that. But the fact is, like, you wouldn't have that discussion if the three right-handers on the top of the order, right? So it's fine. And Kishan grabbed his chance, and I mean Sanju played the Namibia game. He scored 22 of 8. He fine, right? He didn't take his shot, but even if he'd scored runs against Namibia, I think Kishan and Abhishek would have still been the preferred opening partnership because they can just fire from ball one, and if one of them gets out, then the other one does the job. So it's yeah, if you can go from both ends. It's an unbelievable combination. बिल्कुल. और Also like मतलब एक और जो like दूसरी चेंज थी, bringing in कुलदीप और अर्शदीप सिंह. like मैंने जब इंडिया पाकिस्तान में कुलदीप को खेलते हुए देखा है since 2018, Yeah, वो कुछ ना कुछ करके ही जाता है. तो like we क्या है can't ऐसा कुलदीप we में कि we हमसे खेला नहीं we जाता. we can't play him like Yeah. we already struggle a lot against wrist spinners. तो जब भी कोई wrist spinner आ जाता है, whether it's हाँ like but Adil. शम्सी, नूर अहमद still to an extent, but शम्सी के अगेंस्ट हमने इतना स्ट्रगल नहीं किया जितना हमने कुलदीप के But अगेंस्ट किया. yeah, like Shamsi isn't that league But of a wrist spinner. Kuldeep is also a generational bowler, yeah. Like वो उनको खिलाते नहीं है Yeah. because we've got like too many other players. But like Yeah, yeah. he's possibly the best wrist spinner since Shane Warne is poor man, rest his soul in peace. But since he retired, he's probably the best wrist spinner that's played the game, and he's हम्म. hardly played any for India. यस. Yes. लेकिन जो मसला है ना वो जो कुलदीप वाला मसला भी है और जो इससे पहले भी एक मसला किया उसका जवाब दिया है कि वो ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे नहीं जाते. अगर हम इंडिया की टीम देख लें कोई भी टीम से उठा के देख लो वो स्ट्रेंथ्स पे अपनी पे जाते हैं. दे बैक देयर ओन स्ट्रेंथ्स जो हमेशा कब तक कर रहे थे अपने आप को प्लेयर्स को बैक कर रहे थे. लेकिन उसके बाद हम वो है ना कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं. हम अपने 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 किए हुए फैसलों को हम मुकरना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमने गलत किया था अब हम दोबारा उस पर जाएंगे. अगर हम आज के मैच में भी देखते हैं वी प्लेड शाहीन शाह कि हमें पता है कि वो इंडिया के अगेंस्ट ठीक करता है. हमें ये नहीं पता कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है. हमें ये नहीं पता कि सलमान मिर्जा बहुत अच्छा कर रहा है. हम उसके साथ बिल्कुल नहीं गए. वी वी प्लेड बाबर कि भाई बाबर बड़े मैच का प्लेयर है एक दिन जरूर चलेगा. लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ इंडिया ने नहीं सोचा कि वो शुभमन गिल के साथ जाए कि शुभमन गिल कैप्टन है. अगर यही फिर मैं हमारा कोई एक No, कैप्टन हो no, no. वनडे एक टीम का मिनट. उसको ड्रॉप कर दें वो तो फिर ईगो एक पे आ सेकंड एक जाएगी. No, सेकंड एक सेकंड. हमने बाबर अगर को अगर इसलिए नहीं ये खिल. सोचना होता ना कि इंडिया के खिलाफ चलेगा, बड़े मैच का प्लेयर है, तो शायद हम फकत जमान को खिला लेते और शायद कुछ बेहतर कर देते. Yeah, yeah. और हमने हम बाबर को तो चैंपियंस ट्रॉफी पे नौ ही बैठ नौ जाएंगे. और साल हो हम गए सर उसको और हमने और हमने बाबर को तो धनंजय इसलिए भाई खिलाया नहीं 19 के था. वर्ल्ड कप में भी एक 50 थी यार.
थोड़ा हाँ सा और ठीक है मार ठीक लीजिए नो 90 नो पे भी। नो 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 बढ़िया और बढ़िया बढ़िया और हमने बाबर को तो इसलिए खिलाया ही नहीं था कि हम कहते हैं कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। बाबर वाज सपोज टू बी द एंकर और द अगर कोलैप्स होगा तो ही हम्म विल बी द गाय दैट द विल स्टैंड सेफ्टी इन नेट यू कैन से। द सेफ्टी नेट। हम्म यस, द सेफ्टी नेट, द वर्ड दैट्स बीन यूज्ड। सो नहीं, बट लेकिन हमें हमारा ये भी तो मसला है, हमें लगता है कि जो प्लेयर अटैक करे वो एंकर कर ही नहीं सकता। हम एंकरिंग के लिए भी हम स्पेशल प्लेयर्स लेके आते हैं, लेकिन वही काम आगा, नवाज, शादाब भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे। मसला वही है। अभी आपने बात की थी कि हम पाकिस्तान चेस की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी थे। अगर 2021 में हमारा जो ओपनर है वो रिजवान और बाबर है, तो मैं उस ओपनिंग पेयर के साथ मैं चेस पे ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों रन्स भी अगर ऑन बोर्ड पे लगाने जाएंगे, ये हद से हद 140 120 इनका टारगेट होगा। लेकिन अगर ये चेस करने जाएंगे, ये चेस कर लेंगे। तो अभी भी अगर अभी जो हमारी 11 है, इसमें हमें पता है कि दे विल गो फॉर अटैक, मतलब साइम और साहिब ज्यादा फरहान। इस स्ट्रेंथ के साथ, इस टीम के साथ आप कभी भी चेस करने नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कोई इसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं। लेकिन कमिंग टूवर्ड्स इंडियाज बॉलिंग, अगर हम ये इंडिया की बाकी बॉलिंग एक की बात। बिरमान से हाँ, पहले यस यस। डीजे भाई, लाइक आई हैव वन क्वेश्चन कि हैव यू एवर सीन समवन अटैक जसप्रीत बुमराह सक्सेसफुली विद अ क्रॉस बैट? क्रॉस बैट तो पता नहीं फरहान गॉट सम रन्स अगेंस्ट हिम नो साहिबजादा या बट वो इस तरह के लाइक प्रॉपर पुल्स नहीं थे जिस तरह लाइक आज ये सारे ट्राई कर रहे थे अगेंस्ट पांड्या एंड बुमराह, हाँ लाइक हम्म I लाइक think आई this स्टिल guy got रिमेम्बर। yeah last game Bumrah went for 58 runs in the या T20 series अभी जिसके साथ जो एशिया खेली थी कप, हमने नहीं नहीं न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ खेली थी बट वो एज वेज लेके गए थे आई डोंट सी अगेन it comes back to the same point Bumrah is another generational talent man like he's the Wasim Akram हम्म of our generation right like how many हम्म people got away with hitting? I can think of Wakar got hit once by Jadeja, but I can't think of Wasim actually being taken apart by anybody ever. यस। Straight bat or cross bat, never. Like Wasim was a next level bowler, and so was Wakar, of course. I mean, one off day doesn't make you not. But Bumrah is just bowling. You're bowling 145 clicks and swinging the ball at the same time with accuracy and your action, which means that you release the ball even closer to the batter than and in both ordinary. direction as well. In it's not possible, man, to play that. It's not possible. So Yeah, straight bat, cross bat, it's you can get lucky on some days. Yes, he may be having an off day, but um, yeah, it's difficult. I think it's a like difficult if task. hmm, like my point was this game, why would you try something like this against Bumrah and Hardik So Pandya when you know? that's what you do, right? Like you have to play them out. You have to, if you can play it out those 24 balls, and then but then who are you going to attack? You have to figure out who are you going to score the runs of. There's Kuldeep, then there's Akshar, then there's Varun Chakravarti, then there's Pandya, and then there's maybe Dubey, a little bit of Dubey. So if you get to yeah, I think Dubey you and all, can then attack. fine. I think you but can but but take but the punt on Dubé. yeah, लेकिन अब Dubey but got I the क्रिकेट think bowling, नहीं he है ना didn't have to मैच। bowl, no, right? but I think like as we saw today, like I thought that the first over that Pandya bowled, I don't think that it was necessarily a very good over. I would say like any other batter would have smashed a few of those balls for boundaries. Those are very Yes, hittable लेकिन balls. भाई आप जाएं 2022 एशिया कप, ठीक है, both I games I know, think I know, I they know. got similar dismissals. You see Yes, 2022 T20 yes, World Cup, Hardik got played similarly out. I think 24, yeah, yeah, yeah. But yeah, I but think in like the it's same fashion as well. Like yeah, Babar, but my Rizwan, Farhan, Fakhar, Nawaz, everyone got an out to yeah, Pandya on a bouncer. but my point was not that Bandia does not take wickets. Yes, he can take wickets, but Hmm. other sides at least take him down for runs. One of the areas where Pakistan has suffered or have not been able to is that not take him down for runs. They have gotten out to him, but have not also been able to score runs at all. So I think this is one of the areas. It's not like that the bowling is
very extraordinary. Yes, like taking down Bumrah or Kuldeep Yadav is a difficult task because their skill set is very high. You can't pick Kuldeep out of the hand, but Pandya isn't one of Bumrah or Kuldeep. So and that's where the difference between the both sides, the skill level sort of comes in, that you can't hit those hittable balls for sixes, which other players, whether it be you bowl these balls to someone like Travis Head or Mitchell Marsh or Eden Markram, they'll smash those balls out of the park any day long. So the point being, yes, there is uh, bowling, but I think it's also a matter of Pakistani batters not having that skill set uh, Yeah. that you really need to take down bowling in T20 cricket, or even if they have the skill set, their shot selection is pretty bad. Hmm. Like right now, like these were different players, different years, but the same bowler bowling the same kind of delivery, and you are getting out in the same fashion. Like Yes, that is not ये एक आधे player की गलती नहीं है. ठीक है, बुमराह इज पांड्या इज वेरी गुड, बट स्टिल लाइक इट्स एक ही चीज वो कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years, और किसी भी बैटर से वो पिक नहीं हो रही. yeah, तो आपके स्किल का इशू है. लाइक ठीक है, पांड्या इज गुड, बट वो मेजर इशू जो है वो आपके सिस्टम का है, या आपके ओवरऑल जो है वो टीम के yes, इकोसिस्टम में है. yes, absolutely. स्किल सेट और से ज़्यादा जब कोई बॉलर एक ही वेरिएशन के साथ या एक ही स्टाइल के साथ विकेट ले रहा होता है तो ये बैटर पे भी प्रेशर बिल्ड करता है कि भाई मैंने इस बॉलर को इस तरह विकेट नहीं देनी, और फिर उसके चक्कर में वो मेंटल प्रेशर की वजह से वो विकेट अक्सर दे जाता है। और ये हमने अक्सर पाकिस्तान बैटर्स के साथ तो देखा ही देखा है हमने। बाकी जो मतलब अगर वो वर्ल्ड कप वाला साउथ अफ्रीका वाला मैच है जो क्लेसन ने विकेट दी है, मतलब वो जो जो वो आउट हुआ था वो भी इसी वजह से आउट हुआ था कि मैं शायद आउट ना हो जाऊं, तो इन द फियर ऑफ नॉट गेटिंग आउट प्लेयर आउट हो जाता है, और वो फिर द प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या उनको फिर फायदा होता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या टाइप प्लेयर्स हैं, दे विल नेवर लीव देयर स्ट्रेंथ। मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ पे रहेंगे और उसी मतलब लाइन एंड लेंथ पे बॉल कराते जाते हैं, और फिर बैट्समैन जहां पे भी गलती करता है या अटैक करने की कोशिश करता है वहां पे वो विकेट लॉस हो जाती है। तो आई गेस दिस इज द थिंग कि क्यों बैटर्स इन टाइप ऑफ बॉलर से ज्यादा आउट हो जाते हैं। कमिंग टुवर्ड्स yeah, इंडियन टीम, अभी तो इंडियन टीम जैसे डीजे अब क्वालिफाई कर चुकी है फॉर द सुपर एट्स और सब है, मतलब इंडियन टीम इज़ द ओनली टीम इन द वर्ल्ड कि अगर हर फॉर्मेट उठा के देख लें दे आर द टॉप टीम, और मतलब किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल तो वो खेल ही रहे हैं, मतलब दे आर द आई फेवरेट्स। आई थिंक व्हाइट व्हाट डू यू बॉल, यस, टेस्ट मैचेस आजकल थोड़े वीक चल रहे हैं, बट ठीक है। चले ठीक है मैं वाइट बॉल पे आ जाते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक कि अभी भी स्टिल इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि हमने जो एक बैटिंग देखी है इंडिया की, अगर हम ईशन किशन की तो बात करें कि उसने डोमिनेट कर दिया, बट स्टिल डोंट यू थिंक कि जो टॉप ऑर्डर है वहाँ पे अभी भी कोई ना कोई गैप्स हैं कि जो फिल इन हो सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन अगर आज 72 रन्स नहीं करता तो पहले 10 ओवर में से 10 रन्स ही थे जो स्कोर थे तिलक वर्मा की तरफ से, मतलब 85% रन्स तो उसी ने किए थे। हाँ, तो आई थिंक what India would like to see is Abhishek Sharma getting some हम्म runs. It's inevitable, it'll come. And it's good he's saving his runs for the latter part of the tournament. He's got 2 matches, 2 ducks. And हम्म the other thing India would like to see is कि pitches थोड़े batting friendly हो, तब वो 300 के करीब मार सकती है टीम, because I actually think this team is capable of breaching that 300 barrier in T20 cricket, because um, they don't stop. It's like how England used to हम्म play ODI cricket a few years ago. Okay, they were going from ball one and just going on hitting. They don't stop. Even today, you saw Pandya came out first ball, he tried to hit. It was difficult. He got out fine, हम्म fine, carry on. But they are highly skilled players. They हम्म play the IPL under immense pressure every हम्म game, right? Like they are used to this kind of pressure. They're used to the eyeballs. Like I don't know how the PSL goes, but like the IPL is as heavily followed as any other ICC tournament towards the back end of that tournament. So it becomes it gets all, it's called quite serious, and there's obviously large amounts of money involved. Uh, and it's not just the
that there's one sweet that like you win it by batting well or you win it by bowling well. This is an all-round team with people that are, uh, as I said, generational talents when it comes to bowling, but also incredible when it comes to batting. Sky is their captain, like Mr. 360, like T20, born out and brought up on T20 cricket, probably the best example of someone who's mastered that art. And he's the senior statesman in this team. You've got Abhishek, you've got Kishan, you've got Pandya, you've got Rinku, who again today, like you could see, he's played a lot of T20 cricket, right? So when Shaheen Shah Afridi bowled the first one wide, he hit that one over. Then he knew the next one is coming towards the stumps when the field's been adjusted, and he's just stood there and gone huge six. So these are all things that come from playing a lot of T20 cricket under high pressure, and there is for each one of these guys in the 11, there's four people waiting to take their spot equally good, if not. Like you could make multiple 11s of the Indian cricket team, each of whom could like play in a World Cup, right? There's, as I said, Shubman Gill is not playing, Rituraj Gaikwad is not playing. We've not picked lots of Bishnoy, who used to be the number one spinner in the Hmm. world, T20 Yes. bowler in the world. He's not in the conversation, right? So it's yeah, I think improvement is always there, and I think they'll want Abhishek to get runs, but I don't think there's skill level improvement that can. It'll take something pretty special to beat this Yeah. team in this tournament. Is my view. It's just that they look like they've got all their bases covered, but and I say that because I'm a lawyer, but anything can happen on a given day, right? You could have Yes. a freak scenario. You could have two wickets in the first over. You could have 80 runs in a power play. You could have somebody having an off day, and everything can change. So the other teams will hope that India have an off day and they have a good day. Yeah. I still अभी think जो अभी हाँ I जी would आप like ऐड to करें. add was that yes, Indian batting is very, explosive and, they can take down any bowling attack whenever they want. But I think uh, the Indian bowling is a bit weaker suit. Like, yes, it has quality bowlers, but it can be taken down. And as even we saw today, like, yes, Pakistan did lose early wickets, but despite that, Usman Khan, and if you apply yourself to, you can score runs against them. It's evident. So I think going into the later part of the tournament, I think it will be important that the bowling continues to step up for India, because if it uh, because that will be very important, because yes, they could get betting friendly wickets, but there could be more wickets, which are not as conducive for batting, as we have seen so far. And I actually think the wickets so far have narrowed the gap between teams because the Yes, more difficult wickets have meant that India haven't got those 250 plus scores that they're used to yes, getting. yes, And that bowling hasn't been tested as yet, really, yes. in conditions where it needs to defend a smaller target that the batting hasn't fired. So, um, yeah, I mean, I think you say that they are weaker, but it's in comparison to the batting. I think, Yes, yeah, yes, probably a fair comment. Yeah. एक और चीज़ जो अभी मतलब बात की थी कि इंडिया की स्ट्रेंथ्स है मतलब 2 टीम्स तो चलो बन सकती हैं और आईपीएल में भी हमने टैलेंट देखा है मतलब अभी भी स्टिल अगर हम बात करें वाइट बॉल टीम का एक कैप्टन अभी भी बेंच पे है मतलब शुभमन गिल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड एज़ वेल। लेकिन अभी एक और चीज़ जो कि आजकल चल रही है और बड़ी उस पे बातचीत भी हुई है कि कुछ प्लेयर्स के बारे में जो कि इन टी20 क्रिकेट वी नीड स्लोगर्स इन आवर बैटिंग ऑर्डर एज़ वेल और हमारे एक फॉर्मर बॉलर हैं उन्होंने बोला कि जो अभिषेक शर्मा है वो स्लोगन है ही इज़ नॉट अ प्रॉपर बैट और जो तो उस पे भी मैं राय राय लेना चाहता हूँ कि व्हाट्स योर टेक ऑन दैट क्योंकि अगर हम ईशान किशान की Sorry, बात करते हैं ही I've इज़ अ missed this स्लोगन एज़ comment. I've missed this comment. Who's the former bowler who's made this comment? former bowler, I This guess is he's basically famous in India. Mohammad He's Amir. famous in India, Mohammad. Amir. अच्छा. बेसिकली हाँ, इस पॉइंट वाज कि लाइक जो बैट्समैन जिसको मैंने नहीं देखा कि लाइक वो टेस्टिंग कंडीशंस में सरवाइव करे या लाइन पे आके जो है वो बॉल रोक सके, मैं उसको प्रॉपर बैटर नहीं काउंट करता, ही इज जस्ट अ स्लॉगर. ये शायद I don't know whether Amir's got a TV.
I don't know whether he's seen Abhishek Sharma Geo bat. News. Okay. So I don't know whether he's got a cable connection उनके घर में cricket आता है कि नहीं, but देखो boss, anybody who sees that guy bat um knows he's actually a classical batter who times the ball rather than muscles the ball. इतना सा तो है यार. हाँ. He can't be a slogger. This is very funny actually. Like I don't know. Look, I mean, people have to stay relevant, right? So they'll say whatever they have to say. This is I just a think it's nonsense comment. It can't be taken I seriously. think उसी शो में लाइक राशिद लतीफ थे उधर तो उन्होंने कहा था कि अगर इफ दैट्स द केस तो ऐसे दो स्लॉगर्स हमें भी चाहिए तो आई थिंक ये हाँ सही है ऐसे दो स्लॉगर हाँ बिल्कुल. I mean, Abhishek Sharma, poor guy, maybe 60 kilos in total. He's like a stick, yeah. Like he's it's slogger. So like I don't know who you'd call a slogger anymore. I mean, all of these guys, they of course they go to the gym, but they don't slog the ball. It's very difficult to be that successful slogging the ball with that average, that strike rate. Yeah. नहीं, अगर अभिषेक शर्मा स्लोगर है भी, रन्स तो आ रहे हैं ना, मेन काम तो हो रहा है. हाँ अगर वही मेन बात काम है. नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा? अगर ना हो रहा होता तो देन वी कैन डिबेट. उसके अलावा भी अगर उसके साथ जो प्लेयर है, मतलब क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाले बाकी प्लेयर्स तो हैं, देयर टीम इज सेटल्ड. जब अपनी चीज ठीक नहीं है, हम दूसरों को जाके कहेंगे कि आपका स्लोगर है, वो No, प्रॉपर no, बैट but करें. this is all आई mind गेस games. या. I don't know whether Amir's actually seen him bat or not, but I can't take it seriously if he's actually seen him bat, but maybe it's just mind games. And you know how McGrath used to say we'll win the Ashes 5-0. It's that kind of thing. You can't take it too seriously. It's just nonsense. It's not cricketing analysis. या जिस जिस टाइप ऑफ शो पे वो बैठ के उसने स्टेटमेंट दिया, वहां पे यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग सीरियस एज वेल. But that's what this was it from today. हमने इंडिया पे पाकिस्तान पे मैं ज़्यादा इस बात पे हो नहीं सकती. हमने मोस्टली वही बातें की हैं जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के रिव्यू पे भी की थी. सो हमेशा यही एक सेम कहानी रहती है. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है, आई बॉल्स होती हैं, टीआरपी होती है, और हम फिर आकर बात करते हैं कि पाकिस्तान इस दफ़ा क्यों हार गया और इंडिया इस दफ़ा क्यों जीत गया. No, सो no, थैंक यू I'm वेरी just मच. thankful that there या. was no YouTube back in the 90s when we used to watch. Like we used to remember when we used to beat Pakistan, 96 में हमें याद है, Amir Sohail, Venkateshwar. These are all moments that like now they stick with you guys, 152 for no loss. So everybody, it all goes round, everything goes round and comes around. So yeah, but I'm just 152 glad we with didn't have to do the show back then. यस. 152 विद नो लॉस ने तो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान भी किया, आज तक भी कर रही है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट मींस अ लॉट कि No, आपने no, हमें दोबारा टाइम दिया. pleasure, एंड होप guys, pleasure. yes, see you soon, and thank you very much. जिस जिसने ट्यून किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट thesportsite.com. फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी. टेक केयर, बाय बाय.